guys, this is Tanveer Rajput and today is special day for me because I got my special HGC wrestling kit. I think you can see its logo. So let's see what is inside this bag. I will try my best to show one by one. The first one is Endure shoes. Okay, this one is Endure shoes. The second thing is this one is a wrestling costume, you know. So this one is, yes, this one is socks and this is towel. ये हम लोग जब थक जाता है बंदा तो पसीना वगैरह पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये गया इधर. And the last thing is, what is this? This is track suit with the logo of HGC. So let's open this packing. It contains two things. One is trouser, as I have already mentioned, with HGC logo, with a beautiful US logo and beautiful height. And the last but not least, my favorite shirt with a Punjab logo and Prime Minister Youth Program. कल इंशाल्लाह मैं रेसलिंग की नेशनल खेलूँगा. तो आप सब से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करना ज़रूर. मतलब कि सबके लिए दुआ करना यार. जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाए, बस किसी को चोट ना लगे. ना मैं किसी को लगाऊँ ना कोई मुझे लगाए, क्योंकि हर इंसान अपने अपने काम में प्रोफेशनल होता है. नो डाउट आई एम नॉट मच प्रोफेशनल और मच इंटेलिजेंट इन स्टडीज़, लेकिन किसी वक्त में थे हम भी. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी दैट अल्लाह अलमाइटी selected me as a wrestler and give me a fame. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त दी है वो ही बहुत ज़्यादा है कि यार इतना बड़ा रावलपिंडी डिवीज़न है और आप उन 12 लड़कों में से सेलेक्ट हो रहे हो, और वो 12 में से भी एक वेट कैटेगरी में सेलेक्ट होना बहुत इज़्ज़त की बात है. बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ ज़रूर करना मेरे लिए. ओके, ना चोट लगाऊं मैं और ना मुझे चोट लगे, ताकि आप भी हैप्पी रहें, मैं भी हैप्पी रहूं और सामने वाला भी हैप्पी रहे. सो अल्लाह हाफिज़. Inshallah, I hope that I will meet you again tomorrow with a good news for you. I don't think that if I got select or reject, it doesn't matter for me. If I got select, this is better. And if I got rejected, then I will try my best and repeat this again. Work hard and try my best to win this medal. Okay, Allah Hafiz, and remember me in your prayers. Allah Hafiz.